Manoj Pandey will be laying the wreath and will pay his respects to the fallen heroes who made the supreme sacrifice in service of the nation. I request all the spectators to kindly maintain silence during the solemn ceremony as a tribute to those national heroes.
When you go back home, tell them about us and say, for your tomorrow, we gave our today. Army Day is celebrated on 15 January every year. It was on this day in 1949 that Lieutenant General K.M. Karyappa took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Great Indian Army. A great sense of pride in the country and its valued soldiers binds the nation together, and that sense of pride shines on every face here, men, women, and children. Today, the Army rededicates itself to become a part of the war-winning team with a smartly turned out parade. The parade now awaits the arrival of the Chief of the Army Staff, General Manoj Pandey, at the parade ground. General Manoj Pandey, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, Vishish Seva Medal, 8D Camp, an alumnus of the National Defence Academy, was commissioned in December 1982 into the Corps of Engineers, the Bombay Sappers. The General Officer commanded an engineer regiment during Operation Parakram in the sensitive Pallanwala sector of Jammu and Kashmir along the line of control. The General Officer is a graduate of Staff College, Camberley, and attended the Higher Command and National Defence College. In his 40 years of military career, he has tenated important and challenging command and staff appointments in different operational environments, which include command of an engineer brigade in the Western Theatre, an infantry brigade along the line of control in Jammu and Kashmir, a mountain division in the high-altitude area of Western Ladakh, and command of a corps deployed along the line of actual control in the Eastern Command. His staff exposures include Brigade Major of a mountain brigade in the Northeast, Assistant Military Secretary in the Military Secretary's branch, Colonel Quartermaster of a mountain division in high altitude area, and Brigadier General Staff Operations at Headquarter Eastern Command. The General Officer has served as Chief Engineer in the United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea. He has also tenated the appointments of Additional Director General in the Military Operations Directorate at Army Headquarters, Chief of Staff, Headquarters Southern Command, and Director General, Discipline, Ceremonial, and Welfare at the Army Headquarters. He was Commander-in-Chief, Andaman and Nicobar Command, Sincan, and General Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Command. The General Officer held the appointment of Vice Chief of the Army Staff prior to assuming the appointment of the Chief of the Army Staff on 1st May 2022. For his illustrious service, he has been conferred with the award of Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal, and Vishish Seva Medal. The General Officer is the Colonel Commandant, the Bombay Sappers. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से।
परेड स्थल पर आगमन हो रहा है थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का, जिनके द्वारा आज इस भव्य परेड का निरीक्षण किया जाएगा और वीरता एवं अन्य अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। जनरल सलूट! सलाम में जस्ट मेजर जनरल रवि मुरुगन अब थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को रिपोर्ट देने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। Ladies and gentlemen, kindly look to your left. On the skyline, helicopters of 603 Independent Aviation Brigade are approaching the saluting dais in an inverted Y formation led by Colonel B.R. Nambiar, Sena Medal. श्रीमान सेना दिवस परेड 9 अधिकारी 22 सरदार 450 अन्य पद परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हजरत। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, उनके साथ जिप्सी पर परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन परेड की निरीक्षण के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर यह वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। In today's parade are participating many contingents of different regiments. Even though some individual styles of drill are different, they all come together in a synchronized display, showcasing the highest military standards under one word of command given in front of you. अगर आपको जिंदगी में असली जाबाज देखने हैं, तो आपको सीमाओं पर तैनात उन जवानों को देखना चाहिए जो खून को जमा देने वाली ठंड में भी हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए जी जान एक कर देते हैं। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा सेना दिवस परेड का विधिवत निरीक्षण होता हुआ। Ladies and gentlemen,
in the gypsies are the warrior recipients of the Paramveer Chakra and Ashok Chakra. Subedar Major and Honorary Captain Yogendra Singh Yadav, Paramveer Chakra. Subedar Major Sanjay Kumar, Paramveer Chakra. Major Generals Cyrus Adi Pitawala, Ashok Chakra, Vishishta Seva Medal. Colonel D. Sriram Kumar, Ashok Chakra. And now the contingents are being reviewed. The first contingent is one of the most decorated arms, the Regiment of Artillery commanded by Captain Shivam Gautam. Followed by the oldest group of Corps of Engineers, Madras Engineer Group, commanded by Captain Akshay Dwivedi. Next, we have the highest decorated group of the Corps of Engineers, Bombay Sappers, which is commanded by Major Gaurav Tiwari. Approaching from your left in the bars formation with one Sukhoi 30 MKI aircraft in the lead, flanked by the Jaguar aircraft on either side, is the fly past. The formation is being led by Group Captain Bhargav. Showcasing the highest military standards, ladies and gentlemen. And now the contingent. In front of you, the pride of the Indian Army, the Maroon Beret Parachute Regiment, donning the new combat uniform, led by Major Saurav Paik, is now being reviewed. And now we have the oldest and one of the most decorated regiments of the Queen of the Battle. Infantry, the Madras Regiment Contingent, commanded by Major Vaibhav Chaurasia. Followed by the contingent of the Mahar Regiment, commanded by Captain Rahul Singh. Participating for the first time in this parade, heading the rear guard is the horse-mounted contingent of Army Service Corps, led by Lieutenant Colonel Jashpal Singh Negi. देवियों और सज्जनों, आज के युद्ध में ड्रोन और यूएवी का महत्व सर्वोपरि है। सेना में कई तरह के ड्रोन का परीक्षण किया जा रहा है, उसी की एक झलक आज यहां दिखाई जा रही है। ड्रिल स्क्वायर के बाईं ओर आप देख सकते हैं दक्ष लॉजिस्टिक ड्रोन गर्व से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय सेना का ध्वज फहराता हुआ आ रहा है। यह ड्रोन 6 से 8 किलोग्राम वजन उठाने में सक्षम है और इसका उपयोग आपदा राहत सहित रक्षा बलों के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। यह ड्रोन वर्तमान में चेन्नई के समुद्र तट की निगरानी कर रहा है। उसके पीछे दक्ष एग्रीगेटर्स भारतीय सेना कमान के झंडे फहराता हुआ। इस ड्रोन का उपयोग कृषि यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किया जाता है। अंत में दक्षिणी सेना कमान ध्वज उड़ाने वाला मिनी सर्विगेटर है। यह ड्रोन ऊंचाई में 30 मिनट तक उड़ सकता है और मैपिंग और सर्वेक्षण जैसे अन्य अनुप्रयोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं पुष्प वर्षा के साथ आज की परेड का अभिनंदन किया जा रहा है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। The Indian Army, being the second largest army in the world,
is a universal source of pride and inspiration for citizens from all across the country, from all hues and walks of life. We dedicate this day to our men in uniform who guard our borders. Parade! Savdan! Parade! समीक्षा क्रम में मध्य से तेज चल Parade! General salute! Salam! Just Parade! Bajo! Just Parade! Vash! Ram! Now the Chief of Army Staff will present awards to officers, junior commissioned officers, and other ranks who have been decorated for gallantry. Shaurya Chakra. The Shaurya Chakra is awarded in recognition of individual acts of gallantry in the face of enemy. लांस नाइक गोपाल सिंह भदौरिया, फर्स्ट बटालियन दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। 12 फरवरी 2017 को लांस नाइक गोपाल सिंह भदौरिया ने जम्मू कश्मीर के एक गांव में एक घेरा और तलाशी अभियान के तहत गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक भागते हुए कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। कर्तव्य की पुकार और विशिष्ट वीरता से परे साहस दिखाने के लिए लांस नाइक गोपाल सिंह भदौरिया को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार उनके पिता श्री मुनीम सिंह भदौरिया ग्रहण कर रहे हैं। श्री मुनीम सिंह भदौरिया। Sena Medal Gallantry,
Sena Medal Gallantry is awarded in recognition of such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as a special significance to the Army. Lieutenant Colonel Vipin Kumar Gaur, 17th Battalion, the Madras Regiment. On 29 June 2021, Lieutenant Colonel Vipin Kumar Gaur, on receiving an input in village Dadal district Sundarban, came into contact with 3 hardcore foreign terrorists. Unmindful of heavy fire and grenade lobbing by the terrorists, he displayed exemplary leadership and mental determination to eliminate all 3 terrorists. For displaying raw courage, Lieutenant Colonel Vipin Kumar Gaur is awarded with Sena Medal Gallantry. Lieutenant Colonel Vipin Kumar Gaur. Major Prabjot Singh Saini, the Rajputana Rifles, 9th Battalion, the Rashtriya Rifles. On 17th November 2021, Major Prabjot launched a cordon and search operation in Kulgam district of Jammu and Kashmir. On coming under unprovoked fire, Major Prabjot retaliated and successfully eliminated 2 terrorists. For displaying tenacity in action and exemplary courage, Major Prabjot Singh Saini is awarded Sena Medal Gallantry. Major Prabjot Singh Saini. Major Aditya Bisht, the Assam Regiment, 42nd Battalion, the Rashtriya Rifles. On 13th October 2021, Major Aditya Bisht established a cordon in a village of Pulwama district in Jammu and Kashmir when his column came under heavy volume of fire. As the terrorists attempted to escape, Major Aditya Bisht, showing extreme sensibility, exceptional courage, and unparalleled selflessness, engaged the terrorist and eliminated him. For this act of exceptional bravery, raw courage, and soldierly character, Major Aditya Bisht is awarded Sena Medal Gallantry. Major Aditya Bisht. Major Nikhil Manchanda, 2nd Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces. Major Nikhil Manchanda led a quad team in Pulwama district, Jammu and Kashmir on 15th October 2021 when they came under accurate fire. Sensing danger to his team and civilians, Major Nikhil Manchanda charged towards the terrorist but came under fire. In retaliatory fire, he eliminated that terrorist and 1 more terrorist subsequently. For his display of extreme courage and exceptional leadership that resulted in elimination of 2 hardcore terrorists responsible for recent civilian killings, Major Nikhil Manchanda is awarded with Sena Medal Gallantry. Major Nikhil Manchanda. Havaldar Deshmukh Nilesh Malharrao, 16th Battalion, the Maratha Light Infantry Regiment. On 19 December 2020, Havaldar Deshmukh Nilesh Malharrao as Rocket Launcher Detachment Commander on receipt of fire assault orders
carried out proactive engagement of the enemy post Jhendi by firing high explosive rounds of 84mm rocket launcher. Demonstrating exemplary courage and determination, his actions resulted in 2 fatal and 2 non-fatal casualties of the enemy. For exhibiting exceptional leadership and commitment to service beyond the call of duty, Havaldar Deshmukh Nilesh Malharao is awarded Sena Medal Gallantry. Havaldar Deshmukh Nilesh Malharao. Nayak Satish Kumar, 62nd Battalion, the Rashtriya Rifles. Nayak Satish Kumar was part of a search operation to locate a hidden terrorist in dense jungle, where his team came under indiscriminate fire. Displaying highest standards of battlecraft, he engaged and neutralized the terrorist at close range. For displaying indomitable spirit and exceptional courage, Nayak Satish Kumar is awarded Sena Medal Gallantry. Nayak Satish Kumar. Sawar Gorla Surendra, 55th Battalion, the Rashtriya Rifles. On 8 December 2020, Sawar Gorla Surendra was part of an operation in a village in Jammu and Kashmir when his buddy came under effective fire. Sensing danger to his buddy, he closed in towards the hiding terrorist, thereby eliminating him in a fierce firefight at close range. For displaying exemplary valor and devotion beyond the call of duty, resulting in elimination of 1 hardcore terrorist, Sawar Gorla Surendra is awarded the Sena Medal Gallantry. Sawar Gorla Surendra. नायक हरप्रीत सिंह, 22nd बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 8 दिसंबर 2020 को नायक हरप्रीत सिंह जम्मू और कश्मीर के एक गांव में एक ऑपरेशन का हिस्सा थे जब उनका साथी प्रभावी फायरिंग की चपेट में आ गया। अपने साथी के लिए खतरे को भांपते हुए वह छिपकर आतंकवादी की ओर बढ़े और उसे नजदीक से भीषण गोलाबारी में मार गिराया। कर्तव्य की पुकार से परे अनुकरणीय वीरता और समर्पण प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप एक कट्टर आतंकवादी का सफाया करने के लिए नायक हरप्रीत सिंह को सेना पदक वीरता से सम्मानित किया जाता है। नायक हरप्रीत सिंह। सिपाही जगप्रीत सिंह, 16th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। 13 दिसंबर 2021 को सिपाही जगप्रीत सिंह ने जम्मू कश्मीर के एक गांव में एक ऑपरेशन के दौरान भागते हुए एक आतंकवादी को बिना जवाबी कार्रवाई के लिए कोई प्रतिक्रिया समय दिए अपनी लाइट मशीन गन से मार गिराया। उनके अदम्य साहस और बुद्धि तत्परता के प्रेरणादायक कार्य के लिए सिपाही जगप्रीत सिंह को सेना पदक वीरता से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जगप्रीत सिंह।
Major Sankalp Yadav, the Regiment of Artillery, 33 Reconnaissance and Observation Flight, posthumous. On 11th March 2022, Major Sankalp Yadav's aircraft suffered a catastrophic failure while landing during a casualty evacuation mission at Choruga, Jammu and Kashmir. Major Sankalp Yadav maneuvered the crippled aircraft away to preclude any harm to personnel. While successfully doing so, he saved multiple lives and made the supreme sacrifice in the line of duty. For displaying exceptional flying skills, professional acumen, and unflinching composure, Major Sankalp Yadav is awarded Sena Medal Gallantry, posthumous. The award will be received by his father, Shri Surendra Yadav. Shri Surendra Kumar Yadav. Subedar Ram Singh, 48 Battalion, राष्ट्रीय राइफल, मरणोपरांत। 19 अगस्त 2021 को जम्मू के राजौरी क्षेत्र में सूबेदार राम सिंह अपनी टुकड़ी के साथ आंतरिक घेरा व तलाशी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इसी दौरान एक आतंकवादी ने उनके दल के ऊपर फायर खोल दिया, जिसमें सूबेदार राम सिंह घायल हो गए। अपनी टुकड़ी को सुरक्षित स्थान में जाने का आदेश देकर और स्वयं गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने पीछा करके एक खूंखार आतंकवादी को मार गिराया। असाधारण वीरता, अदम्य साहस एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए सूबेदार राम सिंह को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी उनकी बहादुर पत्नी श्रीमती अनीता भंडारी। श्रीमती अनीता भंडारी। हवलदार मोहम्मद सलीम अखून, 162 इन्फेंट्री बटालियन, टेरिटोरियल आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत। हवलदार मोहम्मद सलीम अखून 2004 से अनंतनाग के आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल थे। 9 अप्रैल 2021 को भीड़ भाड़ वाले बीज बहरा बाजार में अज्ञात आतंकियों ने घात लगाकर हवलदार मोहम्मद सलीम अखून पर हमला किया। अकेले, निहत्थे और अपनी गंभीर चोटों से बेखबर कई गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से आतंकियों का सामना किया और शहीद हो गए। हवलदार मोहम्मद सलीम अखून को अपने करियर के दौरान अदम्य समर्पण के लिए और अपनी अंतिम सांस तक भी धैर्य और चरित्र के प्रदर्शन के लिए मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार उनकी बहादुर पत्नी श्रीमती जुबैदा बानो द्वारा ग्रहण किया जाएगा। श्रीमती जुबैदा बानो। नायक बनवारी लाल राठौर, 270 इंजीनियर रेजिमेंट, मरणोपरांत। 3 दिसंबर 2021 को नायक बनवारी लाल राठौर पूर्वी सेक्टर के महत्वपूर्ण अग्रिम क्षेत्रों में से एक में अग्रिम चौकी की तरफ
ट्रैक निर्माण के लिए डोजर चलाने का महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। अचानक ही डोजर के पहाड़ी से फिसलने के कारण उन्होंने खतरे को भांपते हुए डोजर को सुरक्षित स्थान की तरफ मोड़ दिया और किसी भी अन्य गंभीर जानमाल के नुकसान को बचा लिया। इस दौरान वह नीचे गिर गए और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए नायक बनवारी लाल राठौड़ को मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार ग्रहण करेंगी उनकी वीर पत्नी श्रीमती सुनीता राठौड़। श्रीमती सुनीता राठौड़। सिपाही शशांक शेखर सामल 233 इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप कंपनी मरणोपरांत। 18 फरवरी 2021 को ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान उत्तरी सीमा के दुर्गम पहाड़ी इलाके और खराब मौसम में सिपाही शशांक शेखर सामल एक 2.5 टन गाड़ी को रिकवरी हेतु ले जा रहे थे। उनके साथ 2 अन्य सैनिक भी उस गाड़ी में थे। अचानक ही उन्होंने गाड़ी को तकनीकी खराबी के कारण अनियंत्रित होते और गहरी खाई की ओर जाते देखा। खतरे को भांपते हुए उन्होंने तुरंत अपने दोनों साथियों को गाड़ी से बाहर कूदने का आदेश दिया और स्वयं वे गाड़ी को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक गाड़ी को नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सिपाही शशांक शेखर सामल को उनके असाधारण साहस, बुद्धि तत्परता और अपने साथियों के प्रति कर्तव्य निष्ठा के लिए मरणोपरांत सेना मेडल वीरता से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार उनकी वीर पत्नी श्रीमती सुष्मिता सामल ग्रहण करेंगी। श्रीमती सुष्मिता सामल। And now, General Manoj Pandey will present the Chief of Army Staff Unit Citations. The Chief of Army Staff Unit Citations are awarded to units of all arms and services, including minor units, for outstanding and sustained performance during operational tasks, peacetime, and aid to civil authorities. The commanding officers and Subedar majors will receive the awards. 81st Armored Regiment, Colonel Saurabh Suyal, Shaurya Chakra, Sena Medal Bar, Risaldar Major and Honorary Lieutenant, Kev Singh Naruka. .299 Medium Regiment, Colonel Manas Nayyar, Subedar Major Sojan Dominic. .117 Engineer Regiment, Colonel Vishwajit Singh Sangwan, Subedar Major R.T. Bolave.
4th Battalion, the Parachute Regiment, Special Forces, Colonel Shailendra Shaurya Chakra, Sena Medal, Subedar Major Sanjay Singh. Thirteenth Mechanized Infantry, Colonel Prashant Punia, Subedar Major Balwant Singh. Twenty-fifth Battalion, the Punjab Regiment, Colonel Akash Ramakant Naik, Subedar Major Nandlal. Eighteenth Battalion, the Grenadiers, Colonel Jatin Guleri, Subedar Major Veer Singh Yadav. Fifth Battalion, the Rajput Regiment, Colonel Rajneesh Kumar Rawat, Subedar Major Uday Kant Sharma. 31st Battalion, the Rajput Regiment, Colonel Kirti Dwaj Singh Shaktawat, Subedar Major Guide Singh. Fourteenth Battalion, the Jat Regiment, Colonel Animesh Das, Subedar Major Umar Ram. Eighth Battalion, the Sikh Light Infantry, Colonel Yashpal Sham, Subedar Major Amrit Singh.
15th Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Manish Ramesh Lanjekar, Subedar Major Shravan Singh. Nineteenth Battalion, the Kumaon Regiment, Colonel Devendra Negi, Subedar Major Umed Chand Thakur. Third Battalion, the Ladakh Scouts, Colonel Ajay Patyal, Sena Medal, Subedar Major Sonam Wangale. Second Battalion, 5 Gorkha Rifles, Frontier Force, Colonel Prashant Mishra, Subedar Major Bam Bahadur Gurang. Fourth Battalion, 5 Gorkha Rifles, Frontier Force, Colonel Parikshit Sharma, Sena Medal, Subedar Major Rajender Bhandari. 34th Battalion, the Rashtra Rifles, Colonel Suraj Kumar Roy, Subedar Major Sant Lal Gurjar. 38th Battalion, the Rashtra Rifles, Colonel Jinu Thankapan, Subedar Major Muni Chandra K. 44th Battalion, the Rashtra Rifles, Colonel Gaurav Dikshit, Subedar Major Mahinder Singh, Sena Medal.
50th Battalion, the Rashtriya Rifles, Colonel Sandeep Seal, Subedar Major Gokaran Singh. Sixth Battalion, the Assam Rifles, Colonel Aman Aluwalia, Sena Medal, Subedar Major Narayan Das. Her heartiest congratulations to all the awardees. May I now request the Chief of Army Staff to kindly address the parade. सेना दिवस 2023 के अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी रैंकों और उनके परिवारों, रक्षा कर्मियों तथा पूर्व सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हम उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपनी जान न्यौछावर कर दी। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेगी। मैं उनके परिवारों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि वो हमेशा सेना के परिवार का हिस्सा बने रहेंगे और हम उनके कल्याण का पूरा ध्यान रखेंगे। साथ ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशंस प्राप्त करने वाले सभी यूनिट्स और व्यक्तिगत गैलेंट्री अवार्ड्स विजेता को मैं बधाई देता हूं। आज की परेड में भाग ले रहे सभी रैंक्स को मैं शाबाशी देता हूं। आपके अनुशासन, कठिन परिश्रम और मिलिट्री प्रिसिशन का यह एक सराहनीय प्रदर्शन था। यह पहला अवसर है जब आर्मी डे परेड और उससे जुड़े अन्य कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से बाहर आयोजित किए जा रहे हैं। इससे सेना को देशवासियों से जुड़ने का सुनहरा मौका मिला है। मुझे यकीन है कि इससे हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे तथा नागरिकों द्वारा हम पर जताए गए भरोसे को कायम रखने की हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। बेंगलुरु की खासियत यह भी है कि फील्ड मार्शल करियप्पा, जिनके भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बनने के उपलक्ष्य में आर्मी डे मनाया जाता है, वो यहाँ से नज़दीक मदिकेरी के निवासी थे। यह इस मौके को और भी खास बनाता है। बीते वर्ष में भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का निरंतर दृढ़ता से सामना किया और सक्रियता तथा मजबूती के साथ सीमाओं की सुरक्षा निश्चित की है। साथ ही सेना ने कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रेनिंग में सुधार संबंधी कदम उठाए और भविष्य के युद्ध के लिए अपनी तैयारियों को और सुदृढ़ किया है। उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है और स्थापित प्रोटोकॉल्स और मौजूदा मैकेनिज्म के माध्यम से शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक मजबूत डिफेंस पोस्चर बरकरार रखते हुए हम किसी भी कॉन्टिंजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे बहादुर जवान
कठिन इलाकों और कठोर मौसम के बावजूद सतर्कता से इन इलाकों में तैनात है। उन्हें सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। सीमाओं पर स्थानीय प्रशासन, अन्य एजेंसीज और मिलिट्री के मिले जुले प्रयासों द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी बहुत सुधार हुआ है। इसको और अपग्रेड करने पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी सीमावर्ती इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीज फायर बरकरार है और सीज फायर वायलेशंस में बड़ी मात्रा में कटौती हुई है, लेकिन सरहद के पार आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बरकरार है। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड वहाँ से होने वाली घुसपैठ को निरंतर नाकाम कर रहा है। जम्मू और पंजाब के इंटरनेशनल बाउंड्री सेक्टर में ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स की स्मगलिंग करने की कोशिश जारी रहती है। इस गतिविधि के खिलाफ भी काउंटर ड्रोन जैमर्स और स्पूफर्स अन्य इत्यादि उपकरण उपयुक्त कदम में लाए गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के आंतरिक इलाकों में प्रगतिशील तौर पर सुधार देखा गया है। वहाँ के अवाम ने हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में जोर शोर से हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफ़ी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई टेक्निक अपनाई है। भारतीय सेना अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर इन प्रयासों को विफल करने पर संकल्पित है। साथ ही हमारा प्रयास सद्भावना योजनाओं पर भी है, जिसके माध्यम से स्थानीय आबादी को मुख्य धारा में हम ले आ सके। इस प्रयास के तहत प्रभावशाली युवाओं को चुने हुए प्रोफेशनल फील्ड और खेलों में अपने सपनों को पूरा करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति में निश्चित सुधार हुआ है। भारतीय सेना ने हिंसा के स्तर को कम करने और इंसर्जेंट्स को हिंसा का रास्ता छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के फलस्वरूप अधिकांश इंसर्जेंट ग्रुप्स ने सरकार के साथ शांति समझौते किए हैं या उस दिशा में वार्ता चल रही है। इन क्षेत्रों में अब विकास की गतिविधियों में तेजी आई है। हम विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को सशक्त बनाने और उनकी समृद्धि के लिए प्रयास जारी रखेंगे। पिछले वर्ष में ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में भी काफ़ी बदलाव देखे गए हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने डिसरप्टिव और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को उपयोगिता के महत्व को स्पष्ट रूप से साबित किया है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइबर और स्पेस युद्ध के नए डोमेन के रूप में उभर कर आए हैं। ग्रे जोन वॉरफेयर ने भी यह सिद्ध किया है कि भविष्य के युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट में काइनेटिक के अलावा नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का भी उतना ही महत्व होगा। इन कारणों से युद्ध क्षेत्र अधिक जटिल, संघर्षपूर्ण और घातक हो रहा है। देश के कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का एक महत्वपूर्ण होने के नाते भारतीय सेना का दायित्व है कि हम इन खतरों के लिए सदैव तैयार रहें। आज भारत एक नए युग की चौखट पर खड़ा है। हम सब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते कद, आर्थिक विकास और प्रगति को देख रहे हैं। देशवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और विश्व समुदाय की अपेक्षाओं को भी हम साक्षी हैं। इस सब के चलते यह अनिवार्य है
कि भारतीय सेना राष्ट्रीय लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से अलाइंड और इंटीग्रेटेड रहे। हमें यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्र की प्रगति में कोई बाधा ना आए। अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ावा देने के दिशा में भारतीय सेना ने ट्रांसफॉर्मेशन की बड़ी पहल की है, जिसका मैं संक्षेप में वर्णन करना चाहूँगा। फोर्स स्ट्रक्चरिंग और ऑप्टिमाइजेशन के प्रयास में हम अपने लड़ाई के दस्तों को इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं, जो भविष्य के युद्ध में प्रभावशाली ढंग से योगदान देंगे। पुराने एस्टैब्लिशमेंट्स और यूनिट्स को भंग किया जा रहा है या उचित बदलाव के साथ नया रूप दिया जा रहा है। टीथ टू टेल रेशियो को प्रभावी बनाने के लिए मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन से सेना को राइट साइज किया जाएगा, ताकि ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन पावर का सटीक प्रयोग किया जा सके। हमारा लक्ष्य होगा कि हम एक मैन पावर इंटेंसिव से टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेना की ओर बढ़े। अपने ऑपरेशनल मैंडेट को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने और खुद को एक आधुनिक, आत्मनिर्भर, टेक्नोलॉजी और बैटल वर्दी फोर्स के में बदलने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा प्राथमिक फोकस होगा हमारे सैनिक, जिनको भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार और लैस किया जाएगा। आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रावधान इस प्रयास का अभिन्न हिस्सा है, जिसके लिए भारतीय सेना स्वदेशी समाधान ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। आत्मनिर्भरता से आधुनिकता हमारा नया मूल मंत्र होगा। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री इस चुनौती के लिए सक्षम रूप से उभर कर आगे आ रही है। भारतीय सेना इंडस्ट्री के साथ एक बायर सेलर रिलेशनशिप से उठकर पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा रही है। इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसमें हैंड होल्डिंग शामिल है। हमें मेड इन इंडिया हथियारों और उपकरणों की मजबूती और संचालन क्षमता पर पूरा भरोसा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कम्युनिकेशंस, अनमैन्ड सिस्टम्स और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसी नीश टेक्नोलॉजीज़ का भी स्वदेशीकरण किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना भारतीय समाधानों के साथ भविष्य में युद्ध लड़ेगी और विजय प्राप्त करेगी। हमारे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को कारगर और एफिशिएंट बनाने के दिशा में कुछ पारंपरिक प्रथाएं जो अब रिलेवेंस खो चुकी है, उन्हें हम समाप्त या बदल रहे हैं। फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें अपने प्रोसेसेस को और अधिक प्रभावशाली बनाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स हमारे ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के महत्वपूर्ण अंग है। पीएम गतिशक्ति इनिशिएटिव के परिणाम स्वरूप भारतीय सेना की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के साथ जोड़ा और समन्वित किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण और तेजी से उभरते भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना अन्य एजेंसीज और विभागों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अग्निपथ स्कीम के आने से एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया गया है। हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से ऑटोमेटेड किया है। रिक्रूटमेंट के दौरान देश भर के युवाओं से इस स्कीम के लिए बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। पुरुष अग्निवीर के पहले बैच की ट्रेनिंग अब शुरू हो चुकी है। ट्रेनिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हम सिमुलेटर्स और मॉडर्न ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अग्निवीरों का आगे चयन करने के लिए एक मजबूत
पारदर्शी और ऑटोमेटेड प्रक्रिया विकसित की गई है। महिला अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस साल मार्च में शुरू होगी। 4 वर्ष की सेवा के बाद अग्निवीर उपयुक्त स्किल्स, वैल्यूज़, कैरेक्टर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ सशक्त होंगे, जो समाज में उनकी क्षमता को बढ़ाएगा और उन्हें अच्छे नागरिक के रूप में योगदान करने में सक्षम बनाएगा। नारी शक्ति की पहल के अनुस्वरूप भारतीय सेना महिलाओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगी। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें छात्राओं के लिए फीडर इंस्टीट्यूशंस को खोलना, महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन और डिप्लॉयमेंट और प्रोफेशनल एवेन्यूज़ के अवसर बढ़ाना शामिल है। आज हमारी महिला अधिकारी और सैनिक सभी ऑपरेशनल थिएटर्स में गर्व और आत्मविश्वास से सेवा कर रही है, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर भी शामिल है। भारतीय सेना अन्य 2 सर्विसेज के साथ बेहतर जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन हासिल करने के लिए पूरी तरह न केवल प्रतिबद्ध है, बल्कि हमेशा आगे रहेगी। इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन में भी भारतीय सेना एक विशेष रोल निभा रही है। इसमें शामिल है हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, जहां मित्र देशों के अधिकारी और जवानों ने तकरीबन 3000 से ज़्यादा वैकेंसीज तथा सालाना जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का फ़ायदा उठाया है। इसके अलावा हमारी 11 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और मजबूती दे रही है। आज हमारे तकरीबन 5800 से भी अधिक यूएन की पीस कीपर्स 8 मिशंस में तैनात हैं। भारतीय सेना अपने सैनिकों, उनके परिवारों, वेटरन्स और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगी। वेलफेयर मेजर्स को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी सर्विंग और रिटायर्ड सैनिकों तथा उनके परिवारों को आश्वासन देना चाहता हूं कि वो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेंगे। अंत में भारतीय सेना और वायुसेना के अथक और बहुमूल्य प्रयासों और योगदान का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे ऑपरेशंस और अन्य गतिविधियों में हमेशा हमारा समर्थन किया है। मुझे यकीन है कि भविष्य में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर विजय हासिल करेगी। इस आर्मी डे के अवसर पर नाम, नमक और निशान की आधारशिला पर कायम हमारी परंपरा अनुसार देश की सेवा में अपने आप को पुनः समर्पित करने का हम प्रण लेते हैं। जय हिंद। Parade! Savdan! Parade! Nikat line! Charge!
थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 75वें सेना दिवस के अवसर पर अपने संदेश में भारतीय सेना की वर्तमान प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और भविष्य की योजनाओं का भी संकेत दिया। कुछ ही समय के पश्चात मार्च पास्ट की शुरुआत होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुतिष्ठत कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। या तो तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त करेगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे कौन्ते, तू युद्ध के लिए निश्चय कर खड़ा हो जा। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सेना है तो हम हैं। फौजी उन हालातों से गुजरते हैं जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम। परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन जिप्सी पर सधे हुए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अनुशासित मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय के पश्चात मंच के समक्ष पहुंचेंगे और थल सेना अध्यक्ष को सलामी देंगे। जब साहस के बादल बरसते हैं समर्पण की जमीन पर, बलिदान का आसमान झुकता है पराक्रम के क्षितिज पर, तब जाकर जन्म होता है सर्वोच्च पराक्रम का। भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा और आज उसका साक्षी बनता हुआ गोविंद स्वामी परेड मैदान। Arms and equipment have changed from swords to missiles, from slingshots to rifles, and from horses to tanks. But the spirit and courage of soldiers has remained unchanged. Ladies and gentlemen, you can now see the contingents smartly marching to the tune of the band, their chests swelling with pride and arms moving like a resurging wave. The men of our army have proved their mettle and have guarded our frontiers, be it the burning deserts or snow-clad mountains, fast-flowing rivers or thick impenetrable jungles. Nothing has ever proved to be a barrier for these gallant soldiers. In the Indian Army, the feeling of brotherhood and esprit de corps binds the soldiers together, leaving no room for disharmony. On the skyline, helicopters of 603 Independent Aviation Brigade are approaching the saluting dais. The flypast is being led by Dhruv helicopters, flanked by Rudra helicopters. The Dhruv helicopter carrying the national flag is piloted by Colonel B.R. Nambiar Sena Medal and Lieutenant Colonel Akshay Jeet Rangar of 201 Army Aviation Squadron, followed by Major Nithun Chakrabarti on another Dhruv helicopter carrying the flag of the Indian Army. To either side are the Rudra helicopters, an indigenously built armed helicopter of 251 Army Aviation Squadron. सलामी मंच के सामने शुरुआत के क्रम में परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन। और परेड कमांडर मेजर जनरल रवि मुरुगन के ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सूबेदार मेजर एंड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, मेजर जनरल साइरस आदि पीठावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल और कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। Ladies and gentlemen, the first contingent is of the Regiment of Artillery led by Captain Shivam Gautam. The Regiment of Artillery has been actively participating in various wars as well as in counter-insurgency operations. It is the second largest arm of the Indian Army, which has produced 5 Chiefs of Army Staff. Regiment of Artillery is also one of the most decorated arms, with 1 Ashok Chakra, 7 Mahavir Chakras, 8 Kirti Chakras, 92 Veer Chakras, 56 Shaurya Chakras and 441 Sena medals.
And now is the Madras Engineer Group contingent led by Captain Akshay Dwivedi. Madras Engineer Group, popularly known as the Madras Sappers, is the oldest among the three groups of the Corps of Engineers of the Indian Army. The Madras Sappers have won the Best Marching Contingent trophy 9 times. That is every time they have participated in the Army Day Parade till date. The Madras Sappers are the only regiment of the Madras Presidency Army to have survived unscathed the extensive reorganizations that took place since its raising on 30th September 1780, followed by the Bombay Sappers led by Major Gaurav Tiwari. The Bombay Engineer Group, popularly known as the Bombay Sappers, is one of the 3 groups of the Corps of Engineers. The origin of the group can be traced back to a company of pioneer Lashkars raised in Bombay during the British East India Company reign. The present 18 Field Company, part of 106 Engineer Regiment, is the direct descendant of that unit. Initially organized at Bombay in 1820, the group has been located in Karki since 1868. And now, ladies and gentlemen, donning the new combat uniform of the Indian Army is the Parachute Regiment led by Major Saurav Pai. They are wearing the symbolic maroon beret and are carrying the 5.56 mm Tavor assault rifle. The paratroopers are performing the double time quick march while singing their regimental song, Kadam Badhaye Ja, Piche Hatna Kaam Nahi, Aage Badhe Ja, showcasing their high physical standards. The Parachute Regiment is one of the youngest and most decorated regiments of the Indian Army. जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, हम वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता. Next we have the marching contingent of the Madras Regiment led by Major Vaibhav Chaurasia of 20 Madras. Motto of Madras Regiment is Swadharme Nidanam Shreyaha, meaning it is glory to die doing one's duty, and its war cry is Adi Kollu, Adi Kollu. It has been conferred with 45 battle honors and 14 theatre honors till date. And now, ladies and gentlemen, the next contingent is of Mahar Regiment, led by Captain Rahul Singh. The martial traditions of Mahar Regiment can be traced back to their service in the army of Shivaji and subsequently in the British Army. The regiment has produced 2 Chief of Army Staff and been awarded both Param Veer Chakra and Ashok Chakra. Ladies and gentlemen, coming into focus, the next contingent on horseback is the Army Service Corps Mounted Contingent led by Lieutenant Colonel Jashpal Singh Negi. The contingent consists of 34 horses and 34 savars. These horses were erstwhile used as second-line transport. The Army Service Corps also takes part in various equestrian events and have bagged many laurels for the Indian Army. The training of mounted contingent, equestrian and polo team is conducted by one Army Training Center of Army Service Corps Center and College. As the parade second in command goes past the saluting dais, we can now shift our attention to the military bands playing martial music in front of you. Kindly sit back and enjoy the sounds of the military bands playing in unison. The military bands today are being proudly led by Subedar Major G. Biju of the Army Ordnance Corps. Unmanned aerial vehicles, or commonly known as drones,
a remotely controlled device used in industries like defense, military warfare, and many other. The aerospace and defense industry initially made drones for counterinsurgency and defense, which have proven helpful in these environments. Today, drones primarily serve the military industry around the world. They help for a wide range of purposes. Since its initial development by the military-industrial complex in Cold War times, drones have come a long way. Unmanned aerial vehicles are increasingly common, seeing more applications outside of combat. Ladies and gentlemen, kindly take your attention to the left. You are watching Beetle drone, which is a hexacopter agricultural drone. The main application of this drone is seed and fertilizer spraying. The drone can also be utilized as a logistic drone or fire extinguisher drone. It has a maximum takeoff weight of 25 kgs, flying speed of 10 meters per second, flight time of 15 minutes, transmission range of 2000 meters, and operating height of 120 meters. This drone has various types of control like fully autonomous, point-to-point operation and manual. It even has radars and sensors for stability and onboard vehicle control. The Indian Army doesn't need anything more than the inspiring tunes of its military bands to march forward. इस वर्ष हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारतीय सेना ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक कर्तव्यपरायणता, पराक्रम, देश प्रेम और वीरता के नए-नए अध्याय लिखे हैं। The Indian Army has a rich and glorious past that dates back to ancient times. It has evolved into a modern, world-class organization. Today's parade gave us a small glimpse into the world of discipline, precision, teamwork, and courage of the Indian soldier. कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पे चल के देख लेना। देवियों और सज्जनों, अपना ध्यान बाईं ओर ले जाएं। पैरा रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर के पैरा मोटरिस्ट हमारे ऊपर नीले आसमान को पार करते हुए देखे जा सकते हैं। पीआरटीसी में एक पैरा मोटर नोड 1998 से आर्मी एडवेंचर विंग के तहत काम कर रहा है। एक पैरा मोटर में पायलट के लिए प्रोपेलर इंजन, गियर बॉक्स और हार्नेस के साथ अंडाकार लचीला रैम एयर एयरफॉयल होता है। अपनी धीमी क्रूजिंग गति और भार वहन क्षमता के साथ दुर्गम इलाके में पैतरेबाजी करने की क्षमता के साथ इस उपकरण में सभी प्रकार के सैन्य संचालन, आंतरिक सुरक्षा और यहां तक कि मानवीय सहायता और आपदा राहत परिदृश्यों के समर्थन में उपयोग करने की अपार काबिलियत है। कुल 3 सोलो पैरा मोटर पायलट हमारे ऊपर हवाई युद्धाभ्यास करते हुए देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज लेकर आ रहे हैं हवलदार सोमवीर। और उनके ठीक पीछे नायक अमोल गोरे।
और अंत में हवलदार राजपाल अपनी पैरामोटर का सही संचालन करते हुए। देवियों और सज्जनों, आपकी करतल ध्वनि से इनका जोश और मनोबल और बढ़ेगा। Ladies and gentlemen, hold your breath. For now entering the arena is the world-famous motorcycle display team, the Army Service Corps Tornadoes. The Army Service Corps motorcycle display team has been the cynosure of the Corps, epitomizing the spirit of adventure, technical skill, and esprit de corps. Stunt riding on a motorcycle demands guts, personal courage, determination, physical fitness, and great skill in handling the bike. The man and the machine have to be in perfect unison to enable the combination to perform the feats of daredevilry. Ladies and gentlemen, And here comes the thundering fleet of 24 motorcycles being led by Captain Abhijit Singh Garewal. the opening salute in a triangle formation. Look at the control and coordination of these riders as the fleet takes the shape of a triangle. Captain Abhijit Singh Garewal is now honoring the chief guest with a ceremonial salute to mark the beginning of a show that is definitely going to give you a rush of adrenaline. The seat-sitting balance. The Tornadoes are now performing the seat-sitting balance. Equal distance between the motorcycles can be observed. The arrowhead formation. Now the teams are heading for the next item, which they have acquired a beautiful position while riding the bike at considerable speed. Four line, they are just warming up. There is a lot more in store. The team is now divided into four horizontal lines. Gone across. Now the riders will be crossing each other in pairs, right in the middle of the ground, starting from all four corners. Zooming past each other at dangerous speeds, they are crossing each other one by one, right in the middle of the ground, starting from all four corners. The crisscross, the team having divided itself into four parallel lines, now head for the next event. Look how effortlessly and swiftly these brave hearts are zooming past. They're zipping out criss and cross. Inner and outer circle. Now you can see the teams are making two concentric circles on the ground. A brilliant show of speed and coordination by the team. Number one team performing the kneeling position, whereas the number two team performing the fish position. Themselves with a single scissor cross. Comes a swashbuckling display of intricate timings, coordination, and profound trust among the team members. Hold your nerves at the speed of the motorcycle is 70 to 80 kilometers per hour. Distance in between the motorcycles is very minor, but they're crossing each other beautifully and displaying their skill and coordination. For those who missed it, here comes another display of the single scissor cross. Ladies and gentlemen, please give them a huge round of applause.
ones together to form the alphabet T on ground. To remind us all that this alphabet is synonymous with the team's name Tornadoes. Hard work, practice, their determination can be seen in this event. Military discipline is seen in all the events of the Tornadoes. And now, the single wheelie. Wheelie is an event where a motorcycle is momentarily balanced on its rear wheel. Of course, one must not forget the indomitable Royal Enfield motorcycle, which has been the backbone of the armed forces as a dispatch rider vehicle. Watch as the rider does a wheelie in this challenging motorcycle. Ladies and gentlemen, with this closing ride, the teamwork comes to an end. But the show is not over yet, as we have some more amazing single events lined up from the Team Tornadoes. As they come forward for the tank balance, another act of daredevilry displayed by the Team Tornadoes. The headstand. Now you can see two tornadoes doing the headstand on the moving motorcycle. Two-in-one. Two tornadoes are riding their motorcycle and balancing them as they stand one side and let go of the handle. The long arm. Now here comes one more balancing act of the tornadoes. The long arm. Constant battle and forces them to develop amazing skill and control of their machine. The arrowhead over arrowhead. One soldier is mounting on the back of another, and look how effortlessly they're riding their motorcycle. The ASC rocket, 7 members on one motorcycle. They're making the shape which they have named as the Army Service Corps rocket. The Ring of Fire. Now I would like to take your attention to the middle of the ground, where Team Captain Abhijit Singh Gariwal and Subedar J.S. Yadav are going to perform a breathtaking event which is called as the Ring of Fire. Sit back and enjoy the event. The two daredevils take off. Give them a huge round of applause. The ladder lotus. Can you guess how many soldiers are there on this one motorcycle? Subedar Mallikarjun, along with his 9 teammates, performing the act of ladder lotus. Daredevilry and precision balance are the cornerstones of the Team Tornadoes. As we come on to one more death-defying stunt by Havaldar Kharge Vijay. He will break the wall of tube lights by his motorcycle and jump through it. देवियों और सज्जनों, आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। Now we come to the twin wheelies, the event where a motorcycle is momentarily balanced on its rear wheel. Doing a wheelie for one person may be easy, but to coordinate it with another is near impossible, and yet the team does it with much aplomb and ease.
Watch the team tornadoes as they come back, coordinating their wheelies and performing right in the center of the ground. The pyramid with the closing ride. Now comes a beautiful human pyramid. A total of 27 tornadoes on 7 motorcycles. Captain Abhijit Singh Grewal in front of the formation. He is climbing on a 10-foot ladder on a moving motorcycle and balancing it beautifully while saluting the chief guest. Ladies and gentlemen, give them a big round of applause for recently the team created 3 more world records on 4th December 2022. Captain Abhijit Singh Grewal created a world record for longest continuous ride standing on the seat of a motorcycle and covered a distance of 114 kilometers in 3 hours and 29 minutes. Havaldar Harikesh Yadav created a world record for longest motorcycle ride while sitting on the tail light and covered a distance of 356 kilometers in 9 hours and 17 minutes. And the third record was by Havaldar Manish, who created a world record for the longest wheelie on Royal Enfield 350cc and covered a distance of 2.4 kilometers in 2 minutes 58 seconds. Thank you, Team Tornadoes, for a fantastic display. Ladies and gentlemen, give them a strong round of applause. Our hopes, like towering Himalayan eagles, aim at objects in airy heights. The little pleasure of the game is from afar to view the flight. You may call it insanity, but we say, for God and country, we defy gravity. Ladies and gentlemen, in a short while from now, the combat free-fallers of Para Center will perform a heart-rushing parachuting display right in front of you. There's a famous saying by a World War II general that aptly describes the paratrooper warrior. Show me a man who will jump out of an airplane, and I will show you a man that will fight for his country. Our paratroopers have done things which most people go to movies to see. Adrenaline rush is a routine over here. Combat freefall is a method of delivering military personnel, military equipment, and other military supplies from a transport aircraft at high altitude via freefall parachute insertion. In here, you have air as the fuel, the colorful Ram Air canopy as your Mercedes-Benz, and your slender body and racing mind as the engine. There are 2 techniques used in this: high altitude low opening and high altitude high opening. In a typical halo-hey-ho insertion, the troops jump from altitudes up to 25,000 feet. Military parachutists will often reach a terminal velocity of 220 km per hour, allowing for a free fall time of up to 90 seconds, and with the favorable winds and modern parachutes, one can traverse up to 40 kilometers from the point of exit to the point of target landing after deploying the parachute in air. Combat freefall is a highly technical skill. The paratroopers undergo intense training. At the same time, it is one of the most dangerous and physically demanding skills as part of special operations. I would request the audience to look straight above your heads and try to locate the free-falling birdies of the team. Coming in hot like a Halley's Comet, piercing the high clouds and blue skies, the 6-member team will paint the skies
of the city of Bengaluru with colorful parachutes. The team will shortly deploy their parachutes and maneuver down to make their final run and land on the ground. Ladies and gentlemen, this is typically done under the cover of darkness as to hide the operator's presence from opposing forces. Our paratroopers pick up this skill young in service and can act as a cutting-edge force multiplier during operations to covertly go behind enemy lines and execute high-value targets. Here they are. Landing in such close spaces, surface wind fluctuations and risks of urban areas makes it very tricky, and the first parachutist has just touched down. Notwithstanding these limitations, here are our paratroopers as they make their final run. Today, 6 paratroopers, led by Lieutenant Colonel Prashant Sivach, Shaurya Chakra, have once again taken a leap of faith from through helicopters of 201 Army Aviation Squadron and have conquered the ground in front of you. Lieutenant Colonel Prashant Sivach is an ace combat free-faller and loves high-risk adventure sports. He is a man who thinks adrenaline rush along with a sharp mind can beat gravity. His contribution to the nation is legendary. It's something to epitomize. And once again, today he, along with his team, has made us all proud of the nation's armed forces, and especially the parachute regiment, while the third parachutist takes on a perfect landing. Ladies and gentlemen, keep watching the skies as the rest of the team come together in picture-perfect conditions. The fourth parachutist is coming in for his final run. Look at the grace in which he performs. And the fourth and the fifth parachutist are all landing one after the other. And as the last member of the team comes into land, we watch for one more perfect touchdown. And here it is, ladies and gentlemen, a breathtaking display coming to an end. Ladies and gentlemen, Deviyon और सज्जनों, a big round of applause for these brave paratroopers. As the paratroopers close up their equipment, take a look at their parachutes and give the final report to the chief guest. The team leader has been personally congratulated by the Chief of Army Staff, an honor of a lifetime. Ladies and gentlemen, now we will watch the movie on Army Day 2023. Theme, Indian Army on Path to Transformation.
राष्ट्र के प्रहरी भी, राष्ट्र निर्माण के भागीदार भी, रग रग में दौड़ता जिसके देश प्रेम का जज्बा भी, प्रबल, शक्तिशाली और तत्पर, वो भारतीय सेना अब है परिवर्तन के पथ पर। भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए एक युवा, आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम, शक्तिशाली और तत्पर सेना के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस लक्ष्य को स्वरूप दे रहे हैं भारतीय सेना के परिवर्तन के 5 स्तंभ। नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और मेक इन इंडिया से टेक्नोलॉजिकली सक्षम होती सेना आज बन रही है आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारतीय सेना ने ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन को तेजी से अपनाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग और ऑटोमेटेड अग्निवीर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कदमों द्वारा सेना के सिस्टम्स और प्रोसेसेस में आ रहा है बदलाव। बदलते समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सेना में हो रहे हैं उपयोगी पुनर्गठन, जो भारतीय सेना को एक एजाइल, मॉड्यूलर और अनुकूल संगठन में परिवर्तित कर रहे हैं। बदलते समय और युद्ध के तरीकों में बदलाव के साथ सेना ने भी बदली है अपनी रणनीतियां और प्रशिक्षण के तरीके। साइबर इंफॉर्मेशन और ग्रे जोन वॉरफेयर इत्यादि के साथ साथ सेना मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयार हो रही है। दुनिया के हर कोने से मित्र देशों के साथ बढ़ती जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और यूएन पीस कीपिंग में भागीदारी हमारी सेना के विश्व शांति में बढ़ते योगदान को दर्शाती है। भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास और संचालन भारतीय सशस्त्र सेनाओं को प्रबलता दे रहे हैं। समन्वय से हो रहा है सशक्तिकरण। भारतीय सेना देश की विभिन्न सुरक्षा एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ मिलकर किसी भी संकट का सामना करने के लिए सक्षम और प्रभावी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट न केवल सुदूर क्षेत्रों में सेना की मौजूदगी को सशक्त बना रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों को मुख्य भूमि से भी जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर से इस प्रगति को मिल रही है अतिरिक्त गति। सेना के अंदरूनी निर्माण कार्य भी अब और आधुनिक और प्रभावशाली बन रहे हैं। बड़े पैमाने पर वनीकरण, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, छावनियों में ईवी चार्जिंग का प्रयोजन जैसे प्रयासों द्वारा क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। मानव संसाधन के क्षेत्र में हुई एक ऐतिहासिक पहल है अग्निपथ। हर प्रांत से युवा, उत्साही और योग्य अग्निवीर देश के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये युवा अग्निवीर देश की रक्षा में ही नहीं, बल्कि सही कौशल पाकर राष्ट्र निर्माण और समाज कल्याण में भी अपना योगदान देंगे। उनके सुरक्षित भविष्य के लिए सेना और सरकार द्वारा किए गए हैं बहुत से प्रावधान।
देश की उन्नति एक पंख से उड़ान भरने पर नहीं हो सकती है। भारतीय सेना नारी सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। सेना में बढ़ती महिला भागीदारी इसका प्रमाण है। वर्ष 2022 के लिए अविनाश मुकुंद साबले को, प्रवीण को, अमित को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सिर्फ रण क्षेत्र में ही नहीं, स्पोर्ट्स और एडवेंचर में भी भारतीय सेना की अभूतपूर्व सफलता देश को एक नए मकाम पर पहुंचा रही है। ये है भारतीय सेना, जो समय और समीकरण के परिवर्तन के साथ देश की सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध, प्रबल और परिवर्तनशील है। Ladies and gentlemen, as the curtains fall on today's parade, I take this opportunity to thank you all on behalf of the Chief of Army Staff, General Manoj Pandey, for your valuable time and commitment. Today's parade was special in itself, for it was for the first time the Army Day Parade was celebrated outside of Delhi. The march past of the smartly turned out contingents, the melodious bands, drones display, fly past by the helicopters, breathtaking stunts by the tornadoes, paramotor display, and last but not the least, the combat freefall made this parade a success in itself. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸೇನಾ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವೆ, ಸತ್ತರೆ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೊದ್ದು ಬರುವೆ ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ.